Now let's start our NCERT. Okay, so I have told in my last class, according to Peter Berger. Now, okay, I also have to tell one more important point to all of you. Always be active in my class in listening. If I am emphasizing on any one part, okay, if I am emphasizing on any one part again and again, that means it is very crucial. And if I am giving examples, that has to be there in your notes as well. And once you go back home, please give 2 hours in making notes. Otherwise, you people will be astray in future. Now let's just repeat what I have taught so far in my last class. I will explain how sociology is promoting scientific temper that can only happen when we are asking too many questions. Then you people would learn to ask your own assumptions, your questions. Whatsoever you people have learned in your life, you may think that no, it is not rational enough to follow that. So you would actually understand that there were lot many prejudices you have in your head with respect to maybe for particular community. So, or you may think that the way you were dressing up can be the only way and it is the only right path. But then you people will see that similar people have same opinion for you as well. According to them, the way you people are dressing up, it's wrong. We can take examples of turban. So for Sikh community, turban is a matter of a prestige to them. It is about their identity. Now, wearing turban to Western people will not make sense. Similarly, the way West people are wearing clothes may not make sense to us. So we here have to be very clear that there has to be relativism. And we can understand this diversity only if we are going to learn to appreciate biasness. What is biasness? And see what statement I have said, to appreciate biasness. Don't you think it is wrong? We are appreciating a biasness. You do have to understand what I am saying. Because here I have given a very important line, to appreciate biasness. So if I'll go through this particular line, don't you think it's problematic? So I am saying to appreciate biasness. Okay, don't you find any problem in this? No? Why? Okay, why? Tell me why. Like a perspective. You can explain if you're thinking, you can tell me. Okay, let me just tell now, then we can have a discussion later on. Now, let's just say that if I am biased towards my identity, that is Indian. If I am biased towards my identity, Indian, right? So I am being patriotic in nature. So it is good. I am working for my community. So I have a we feeling. So far it is good. This is what actually related with the major problem, regionalism. So far, we are recognizing our regional culture or regional ethnic identity being Marathi or Bihari or any other, West Bengal, any, let's just say here, Naga. If we are getting too extreme into it, don't you think it is a problem? Because nowadays,
Yes. Nowadays, Indian government is facing a major threat from Nagaland. They want separate nation. So what is happening? I am getting I am getting too deeper into it, so that I am not connecting as a whole of which identity of Indian. Now again gets back to the point, appreciating biasness. Okay? How sociologists like Max Weber have put it, this is what an art of wonderful teaching of sociology. Max Weber is arguing, Max Weber is arguing on the same question which was being asked to Auguste Comte. Auguste Comte से कहा गया that how can you prove that sociology is a science? Because when physicists is doing research, they can calculate and tell their facts. If I have to tell difference between friction force and magnetic force, I can tell that. If I have to tell the difference between muscular force, I can tell that. I do have different formula, okay, to calculate force, to calculate acceleration or mass, right? Physics talks about calculation. Now, how can sociologists prove their theories? Because I am myself a part of research. If I want to talk about that Naga problem is a nation problem and it is something lacking, something wrong, I have to tell it on rational ground. Now let's come back to appreciating the biasness. So once you know that yes, you are being biased, then only you can control. And this methodology later in advanced class you will know as value relevance. How? What is the term? Value relevance. Value relevance. RELEVANCE. Value relevance is an art or is a process by which we can understand our own feelings. Relevance, no. Value relevance, it's, you can say it's related to your cycle, like mentality only. Value means whatsoever going on in your head. Yeah, values, what you are thinking right now. So Max Weber said that researcher has to know everything about their biasness. So let's imagine that I come from a northeast community and I am coming from the same Nagaland. Just because I am having an identity of Naga, that does not allow me, according to sociology, to support what Naga people is demanding for. Okay, so first of all, I have to understand that if I am getting biased towards these demands, is it right or wrong? So I have to ask more deeper question. So since we are humans, we have to have natural inclination towards our ethnic, towards our in-group. So if I am coming from the land of Naga, definitely I have more understanding of their problems than you. I will have more empathy towards you because we look same. We have same habits of food, dressing. So naturally, I'm going to support. It's a human tendency. But sociology is teaching you to go beyond boxes. It's just because we share common identities that does not make us to support anything right or, I mean, right to theek hai, but if anything is wrong. Right to it's okay.
बायस मतलब कि आप गलत है, मतलब आपको पता है कि सामने वाला गलत कर रहा है बट आप उसको सपोर्ट कर रहे हो. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड. इम्पार्शियलिटी यू कैन से ना. आप पार्शियलिटी मतलब यू आर बीइंग पार्शियल. ठीक है, समझ में आया? सो सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. आई हैव decoded that all this starts with our own belief. तो आप बायस हो कि नहीं वो तो आप तभी बताओगे ना जब आपको पता है कि बायसनेस है क्या. How many of you got this clarity on this? I have given you original explanation. You will not find it in any book. और कोचिंग का जो कंटेंट है या कोचिंग के जो वेबसाइट है, until unless it's not going to be Dr. Huma website, don't trust. आपकी मैं आई एम योर मेंटोर, तो आपको मेरा ही कंटेंट समझ में आना चाहिए ना. तो ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, अप्रिशिएट बायसनेस, डोंट गेट कंफ्यूज. अभी समझ में आ गया ये वाला पॉइंट. नाउ कैन आई रिलेट इट विथ पीटर बर्जर. देखो मैंने पीटर बर्जर की बात को एक्सप्लेन करने के लिए क्लास रोकी, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा, राइट? आई डिड आस्क अ क्वेश्चन एंड देन आई एम आस्किंग हाउ यू पीपल आर गोइंग टू मेक कनेक्शन, isn't it? So it means it is of utter importance for us. It is highly important for us because UPSC will ask you question on this. UPSC ने बहुत सारी क्वेश्चन पूछा हुआ है. वैल्यू न्यूट्रलिटी, वैल्यू फ्रीडम, ये सारे मैक्स वेबर के कॉन्सेप्ट हैं. वैल्यू न्यूट्रलिटी, वैल्यू फ्रीडम, etc. we'll talk about later. So when, and again I would say please make some pointers that how Auguste Comte said that sociology is a science. That debate that sociology is a science. Okay, and then you need to talk about that how sociology is a science. Then people said how can you prove that it is a science, because आप तो prove नहीं कर पाओगे facts and this and that, तो problem होगा. नेचुरल साइंस के पास तो लेबोरेटरीज है, वो वाला पॉइंट डालोगे यहाँ पे कि नेचुरल साइंटिस्ट ने किस तरीके से क्वेश्चन किया, हाउ. फिर ऑगस्ट कॉम्टे ने बताया दैट हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लॉज. जैसे नेचुरल साइंसेस नेचुरल फैक्ट्स लॉज पे काम करता है, वैसे सोशल साइंस भी काम करता है, बट यहाँ पे आप रिलेट करोगे मैक्स वेबर. तो मैक्स वेबर ने कहा कि जब रिसर्चर रिसर्च करेगा तो वो वेल एक्वेंटेड होगा कि कल वो बायस्ड है कब वो नहीं है. ठीक है, अब इन सारे प्रोसेस में अकॉर्डिंग टू पीटर बर्जर, he said that sociologist has to act like a spy. Who is spy? जासूस. स्पाई मतलब पता नहीं चलेगा कि ये जासूस है, ये हमारा इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या कर रहा है. स्पाई, यू नीड टू डिटेक्ट, डिटेक्टिव. तो जो आपको दिखाया जा रहा है, you need to have that lenses to see what is being apparent to us. वो कब हो सकता है? जब आप क्वेश्चन करने लगो. फॉर एग्जाम्पल जब अगर आपने, लेट्स जस्ट टेक अ सिमिलर एग्जाम्पल ऑफ मायोइस्ट. मायोइज्म क्या है? मायोइस्ट का क्या प्रॉब्लम है? सिमिलर प्रॉब्लम, जस्ट लाइक नागा ओनली. दे हैव लॉट ऑफ एप्रीहेंशंस टूवर्ड्स, उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स है, उनको भी लग रहा है कि स्टेट उनकी बात नहीं सुन रही है, राइट? अब you need to think like a detective. You need to see the real cause. You cannot be simply biased. You cannot come to the conclusion so easily. If you are finding real hardcore sociologist, आप देखोगे वो कभी भी जजमेंट नहीं देंगे, वो हमेशा ना एक्सप्लोर करते रहेंगे, और उनका कभी भी राइट और रॉन्ग का आंसर नहीं होता. Until unless they will conclude. वो हमेशा प्रोबेबिलिटी पे काम करेंगे. ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. दिस कैन बी द फैक्टर्स, वन ऑफ द फैक्टर्स, दिस कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स, दैट कैन बी द वन ऑफ द फैक्टर्स, दिस एंड दैट. तो पीटर बर्जर ने
एक्चुअली इस बुक पे यहाँ पे वो यही बात कह रहे हैं दैट हाउ वी डू हैव टू थिंक लाइक अ स्पाई. Here in this particular paragraph, the sociologist is a spy in very much the same way. Okay, you need to talk like that only. We are going to look. We are going to look into this part. Okay. So does this mean that the sociologist has no social responsibility to ask about the goal or study? She has such a responsibility just like any other citizen of society. But this asking is not sociological asking. This is like the biologist whose biological knowledge can be employed to heal or kill. This does not mean the biologist is free of responsibility as to which he or she serves. But this is not a biological question. यहाँ से हम पढ़ेंगे sociology has from its beginning understood itself as a science. Unlike commonsensical observation or philosophical reflection or theological, sociology यहाँ से ये line जरूर लिखेंगे अपने notes में. The sociology is bound by scientific canons of procedures. So whensoever we are making conclusions, we need to tell that. So it means that the statement that the sociologist arrives at must be arrived at through the observation of certain rules. यहाँ से पूरा लिखेंगे evidence that allows other to check, repeat, finding further. So ये बहुत important है. There has been considerable debate with sociology about difference between natural science and human science, between quantitative and qualitative research. ये पूरा paragraph लिखेंगे and I will explain this. मतलब अपने notes में short notes बना लो so that you will understand what I am talking about. Quickly, you can take it out, key points. Okay, people can just understand this. Now, we are actually dealing with topic 2. Sociology as science. Okay, so you people can write down somewhere in that paragraph के आसपास कि this is your topic 2. So you need to understand how sociology is claiming itself to be a science. This is a fundamental question. Now I am making your NCERT base for your topic 2. त्रिलोक समझ में आ रहा है? Right? It's quite easy if you will understand sociology NCERT the way I am explaining. Now to know how sociology is a science, what can be the first question? In this line, yes, Shivan, tell me what you think, what you should be reflecting first on. No, just tell me one word. If you need to do analysis of any word, Kanish, tell me कौन से word पे आपको focus करना होगा? Very good, Kanish. Science, right?
तो पहले आप मुझे बताओ व्हाट इज साइंस, डिफाइन साइंस टू मी, एनीवन। साइंस को मुझे बताओ है क्या, मुझे अच्छा एक दो वर्ड में बता, अपने वर्ड में बता दो मुझे, इन हिंदी ऑल्सो यू कैन टेल व्हाट इज साइंस। प्रिंस, साइंस है क्या? तो प्रूफ क्या करती है? क्या नेचुरल लॉज? ओके, चेंजेस, ऑलराइट। और किसी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो किसी एक वर्ड में, एक वर्ड में? हाँ, ओके, पैटर्न्स क्या? नॉलेज है ना साइंस, और साइंस इज क्या? इट्स नॉलेज एंड इट इज टेलिंग अस सम ट्रुथ, फैक्ट्स। आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो तब आप फैक्ट्स बताते हो। तो साइंस क्या है? साइंस जो है एक नॉलेज है, इट्स अ बॉडी ऑफ knowledge and it is reflecting truth, although we cannot have absolute truth, but जब हम बात कर रहे हैं that how, if I am defining motion, so I can define now that any object when it experience force, it can go from rest to motion, or from motion to rest also if I am applying the force to stop it, isn't it? Force तो यही है। और if I am talking about, let's just say, so this is a physical fact of force. Now if I am telling you biological facts, so we do have different glands, we do have reproductive system, right? If I am talking that, let me have you biosocial example. So in India, do you know that how we have a high rate of female infanticide? Infanticide भी and feticide भी. So womb में ही बच्चे को, if we know that it's a female, so what we do? We kill her. That is why it's a crime to have a sex determination test. Pregnancy में क्या इंडिया में allow है? नहीं है. But you would see in West or in Middle East countries, they don't have such laws. They tell in 4 months or 3.5 months में बता देते हैं gender. इंडिया में क्यों नहीं बताते हैं? So what they want, which gender they want? Male preferences. So due to male preferences, female feticide is happening. Now let me relate this social problem with a biological problem, or biological, sorry, fact, truth. How many pairs of chromosomes we have? Huh? 23, right? Where do they reside? कहाँ पे रहती हैं chromosomes? Nucleus. So DNA and all that हमको ये पता होना चाहिए. We all are made up of cells, right? Now, if I have to understand the gender, which particular chromosomes number? 23, XY. If you have 2X, female, XY, female. Do you know that female can only give XX, right? So it means that female do not have any other chromosome but X. If biologically we have to say, the reason of gender can be determined, it can be the male only because they have XY. तो हम तो XX female XX दे सकती है and male XY, and although it is random, even the male cannot be responsible, but genetically अगर हम बात करें तो XY क्रोमोसोम दोनों क्रोमोसोम्स किसके पास है? मेल के पास. तो ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट हो गया, बायोलॉजी. ओके, देन टेल मी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट how many of you feel stress, or sometime BP low होता है, BP high होता है? We all feel, right? We all go through it. ऐसा कोई, हम सारे इंसान हैं, आपको रोबोट नहीं हो शिवा कि आपको कभी स्ट्रेस नहीं हो रहा है. और ठीक है, इट कैन बी फॉर सम मिनट्स, हो सकता है 1 मिनट के लिए हो, 2 मिनट के लिए हो, होता सबको है, बिकॉज वी ऑल आर
dealing with triggers, emotions. Our brain recognize no emotions but chemicals, right? So when we are going into the adolescent stage, we think we have started having attraction towards different gender. So it's only because of pituitary gland. Pituitary gland is releasing more estrogen or testosterone. What I'm talking about, estrogen, testosterone, what it is, it's biological fact. So what is science? It is just telling the facts which has been proved to us by experiments. So right now, if I'm talking about, there are chemical reactions. So I'm talking about chemistry. If I would say 2 molecules of hydrogen, 1 molecules of, right, oxygen. If I'll talk about atom, if I'll talk about hydrogen, oxygen, atmosphere, all this, मैं क्या बात कर रही हूँ? Chemistry, science. If I'm talking about planetary movements, science, but it's all are facts. Right? अभी recently ये discover हुआ है that the reason why mothers have such a huge connection with their children कि आप यहाँ बैठे हो, आपको यहाँ पे चोट लगी, आपकी मदर को वहां पता लग जाता है. कभी ऐसा होता है ना सबके साथ, एंड नेचुरली यू फील मोर कनेक्टेड टू योर मदर, राइट? सबके साथ है ऐसा. व्हाई इट इज लाइक दैट? तो अभी ये पता चला है क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो बच्चे के सेल्स है वो मदर की ब्लड स्ट्रीम में हमेशा के लिए रहते हैं. ये भी रिसर्च है. तो इवन साइंस इज प्रोमोटिंग लॉट मेनी फैक्ट्स. What I am trying to tell that science is nothing but it's all about truth or the fact. Now, right now, I have given you natural science example. We have 2 branches of science. One is pure science or natural science, other is social science. Politics, political anthropology or political science, economics, these all are history, social science, because it is telling us about social facts. ये लिख लो term social facts. समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? सोशल फैक्ट्स. अब मुझे बताओ, हाउ कम you have given information about facts. मतलब मैंने जो let's take example of how many of you know about any disease, diabetes वगैरह. अच्छा, मैरिस्मस किसको पता है? कौशिकर. टमी आपका ऐसा बड़ा हो जाता है, इसके अंदर कोई पर्टिकुलर हमारे डेफिशिएंसी होती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. चलो, गोइटर जिसमें आपका गला सूल जाता है, बाहर प्रोट्रूडिंग हो जाता है बाहर की तरफ, ठीक है? तो इसका मतलब आपके थायरॉक्सिन सही से कुछ काम नहीं कर रहे हैं, थायराइड ग्लैंड का इशू है, ये सारी चीजें. सो ये सब एक्सपेरिमेंट करा होगा तभी तो हमारे सामने आया है ना फैक्ट. ठीक है, कोई भी एक फैक्ट ले लो, कोई भी एक फैक्ट ले लो. एक बहुत ही पॉपुलर फैक्ट ले लेते हैं, ग्रेविटी. ठीक है, वाई वी आर नॉट फॉलिंग ऑन अर्थ? अर्थ तो मूव कर रहा है, अर्थ भी मूव कर रहा है, हम भी चल रहे हैं. तो जो अर्थ का मास है वो क्या है? वो ज्यादा है हमारे मास से, तो फ्रिक्शन हो गया. तो जस्ट बिकॉज ऑफ, इफ आई आस्क यू हाउ आई एम नॉट फॉलिंग, वेल आई एम वॉकिंग, बट व्हेन अ मैंगो इज falling, so it fall, like it's dropping, so it's fall down. तो पूरा फोर्स अपना पूरा मास के साथ नीचे गिर गया. तो क्या हमारे पर क्यों नहीं अप्लाई हो रही है ग्रेविटेशनल? मतलब इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ना हम नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि हमको चिपका के रखा हुआ है. बट हम वॉक क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो. तो ये सारे हम कोई साइंटिफिक फैक्ट्स की बात कर रहे हैं जो कि लोगों ने प्रूव करी. तो साइंस का मतलब क्या है? एविडेंसेस. क्या मैं ये कह सकती हूँ ग्रेविटी कब बना? जब हमने इसको
प्रूफ कर दिया। तो साइंस, क्या मैं ये कह सकती हूँ साइंस इज ऑल अबाउट प्रोसीड्यूर? आदित्य, कह सकते हैं हम? वी कैन से वेरी वेल दैट साइंस इज ऑल अबाउट प्रोसीड्यूर। अब इसको अपने कॉमन सेंस से यूज करो, दैट व्हाट इज देन साइंस? साइंस इज जस्ट, अगर मैं अगेन फिजिक्स या नेचुरल साइंस की बात करूं, अभी आप लोग जस्ट इमेजिन योरसेल्फ एज अ, वही हमारा फेमस न्यूटन ही समझ लो, ठीक है, या फिर आइंस्टाइन, इन्हीं को बहुत ज्यादा फेमस कर दिया है, ठीक है। तो इन लोगों ने करा क्या, पहले उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? ओके, आपको गलीलियो गलीली के बारे में पता है? Who is Galileo Galilei? Who had given in ancient time, or you can say in during modernity time, about the earth का movement, और उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था when he said that sun is actually stationary and planets are moving and earth is also rotating and moving, right? Galileo Galilei and Copernicus, कॉपरनिकस को तो क्या किया गया था? एग्जीक्यूट कर दिया गया था। निकोलस कॉपरनिकस को मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने एरिस्टोटल और या जो चर्च की फाइंडिंग से उसके अलग कुछ प्रूफ कर दिया। ओके, इसके बाद मैं आपको थॉमस कुन का एग्जांपल बताऊंगी। थॉमस कुन, व्हाट थॉमस कुन इज सेइंग? थॉमस कुन इज सेइंग, टॉकिंग अबाउट पैराडाइम शिफ्ट, वही हमने पहले बात करी थी, पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम बताया था मैंने। तो थॉमस कुन इन साइंटिफिक स्ट्रक्चर ऑफ रेवोल्यूशन, लिख लो कहीं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। Thomas Kuhn, in his work, The Scientific Structure of Revolution, The Scientific Structure of Revolution is talking about paradigm shift. I will tell you later on, बस अभी लिख लो। पैराडाइम शिफ्ट के कोई भी थ्योरी उसी वक्त तक काम रहती है जब तक वो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद ये थ्योरी चेंज हो जाती है। ओके, इट इज लाइक दैट। तो पहले हमारे पास थ्योरी थी कि जो सन है वो मूव कर रहा है, बट अब नहीं है।
You are currently the only person in this conference. चीज़ को कंटेम्पलेट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर कॉमन सेंस नहीं लगाते तो सोसाइटी क्रिएट ही नहीं होती। बट वी आर इन 21st सेंचुरी। अभी हम 21st सेंचुरी में हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि कॉमन सेंस और सोशियोलॉजिकल डिफरेंसेस कैसे हो सकते हैं। ओके, सो पहला पॉइंट ये है कि अगर हम किसी पुअर इंसान को देखते हैं तो हम अपना कॉमन सेंस से जो भी चीज दिख रही है उसमें हम पॉइंट बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कॉमन विथ कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग आपसे पूछा जाए यूपीएससी के एग्जाम के बारे में, तो आप लोग क्या बताओगे? बहुत डिफिकल्ट है, इसमें कंपटीशन बहुत हाई है, ओके, इसमें इतना पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इट इज देयर बट नेचुरल। बट इफ यू आस्क सोशियोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट यूपीएससी एग्जाम्स, they would tell you it is all about transformation. This exam do not demand only 10 hours. It demands critical analytical capabilities. It demands sharp mind. If you people have sharp mind, you will navigate through your obstacles, problems, and you will finally lead to your solution or your goal. Now, sociology would also look this exam that how people coming from different strata will have different types of problems. Okay, so definitely when I am analyzing UPSC aspirants, just after talking to them for a 5 minutes, maximum 10 minutes, I would say, I do realize that okay, what its social background, what's its educational background, and what will be his challenges. Now, definitely challenges who is coming from tribal settings will be different for approaching this exam. Somebody coming from a particular state will be very different. Somebody coming from urban state having background of UPSC ka part will be very different. Okay, so you must be knowing most of the toppers. There are lot many toppers. एक अक्षर जैन भी है शायद कोई, right? So he is उनके parents दोनों ही bureaucrats से, और this is what I have seen, right? So if you people are coming from your, like somebody is married, somebody has this challenge, that challenge, उनके लिए अलग sets of problems होंगी. So sociologists look for the patterns and the commonalities. Okay, so I would be talking on the basis of facts, not only on observations. It is like when we are cooking rice, तो हम एक एक दाने को देखते नहीं है ना कि कुक हो गया, हम we just pick some and we say that okay. Why? Because all those strands of rice under that vessel is going through the similar process, same frame temperature, same this and that, so they would have the same experiences. So similarly, when you people come for this exam, I do know what will be the obstacles of students as a, like general problem. So you would realize that from day one, I am telling you about thinking, thinking, thinking. I'm telling you about strong mindset, right answers, this and that. Speak, because this exam is not at all the way common sensical knowledge is telling us. So common sensical knowledge would tell you that go and join the coaching and you will see the difference. The only difference you will find after joining the coaching that you are have certain guidance, but the coaching can never replace the power of self study. I can only guide. I am guiding every student in, like every day, every year, out of, let's just say, 200 students, because this is the maximum strength I am teaching nowadays, it's 150 to 200, something like that. Okay, so every year
how many students make it? Let's just say 100 ka bhi, it is very less. 10% meaning. So if I would have been a great teacher, तो फिर तो सभी का हो जाता. या it's not only about me. अगर ये एग्जाम फैकल्टी बेस्ड होता, राइट, तो सब क्लियर कर लेते. इफ यू आस्क मी, व्हेन आई यूज्ड टू टीच, like in my graduation, after my post graduation, during my PhD, एंड अभी भी कभी कभी किसी बच्चों को मैं गाइड कर देती हूँ नेट एग्जाम्स के लिए 100% रिजल्ट. बिकॉज इट्स वेरी सिंपल. आई हैव टू ऑब्जेक्टिव टाइप से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किया, रटा दिया, हो गया. सर्टेन एग्जाम में साल में 2 बार ही हो रहा है और प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, सिलेबस सिंपल है. तो अब क्या हो गया? सक्सेस रेट विल बी हायर, isn't it? Success rate will be higher. Now you think your exam, is it only about sociology? No. In net exam it's all about sociology only. And I can guarantee अगर आपका भी ये पूरा एग्जाम सोशियोलॉजी से होगा तो आपका भी रिजल्ट आ जाएगा. But then it's all about writing. And it's not only sociology, SAB hai, GSB hai, lot many parts. Even when you are writing sociological answer, you need to show your critical analytical abilities. Now the same UPSC model, how I have demonstrated differently, a commonsensical point, very different, and my analysis is very different. Now, do I have any commonsensical base? Yes, to even have sociological theories, we are relying on commonsensical knowledge. We cannot out of blue bring this observations. The social world was definitely there before sociology. So the relationship between sociology and common sense is interrelated, interconnected. According to Anthony Giddens, sometimes sociologists are making theories which is of no importance. Of no importance. So it is like social world is there with us. Now I am analyzing it or making theories on it. Is this now clear? Okay. So yes, commonsensical and sociology is very much related. But the difference is commonsensical is not going through scientific procedures. They are just saying that ऐसा होता है. क्यों होता है, कहाँ से होता है, क्या रिसर्च है, इसके बारे में कोई बात नहीं है. So it is only sociology after 18th-19th century have started emphasizing on social facts. Is this now clear? Now you may think that somebody is poor because of his inabilities, but somebody can be poor nowadays in countries like Ukraine or in Gaza because of national internal wars problems. Is this now clear? Now another dimension of sociology, that whenever we look for wars, we look only that it is negative for humans. But sociology will teach you that how even wars have functionality. Why? Because it is telling that what should not be done. So yes, like the world wars we had, World War I, World War II, why are we not having World War III? Because now we know that the consequences. So when the war happened, it happened. So it means even this abnormalities or anomalies is teaching us something. That anything that is going against societal level पे कुछ भी अगर against जा रहा है तो वो भी कुछ lesson दे रहा है. Now Emile Durkheim, what he says, how, no, not in that context, in this context, that if I have to take this statement and analyze it, so am I saying कि crime is good, war is good?
What Imal Durkheim is saying कि crime होगा, wars होंगे. How to distinguish whether it is going to be good or bad for society? If it is in excessive in nature. World War I, World War II में क्या था? Whole world was connected into wars. That's why we have that much of devastation. It was problematic. If a part of society is having some dysfunctionality, तो dysfunctionality तो होगी. प्रॉब्लम कब है? जब एक्सेसिवनेस है. अब मैंने ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी है. व्हेन यू पीपल आर रीडिंग, गोइंग टू रीड इमाइल डरखाइम का थ्योरी, you will understand that the problem of modern society is not individualism, it is excessive individualism. Write down. So you people have to then read it. Sociology thus breaks away from both common sense observations and ideas as well as from philosophical thought. It does not always or even generally lead to spectacular results, but meaningful and unsuspected connections can be reached down only by shifting through mass of connection. So great advances in sociological knowledge have been made generally incrementally and only rarely by dramatic breakthrough. Sociology as a body of concepts, methods, data, no matter how loosely coordinated. So this cannot be substituted by common sense. Common sense is unreflective since it does not question its own origins. Or in other words, it does not ask itself, why do I hold this view? The sociologist must be ready to ask of any of our beliefs about ourselves. So is this really so? Both the systematic and questionist approach of sociology is derived from a broader tradition of scientific investigation. Okay, so this emphasizes on scientific procedures can be understood only if we go back in time and understand the context or social situation which the sociological perspective emerged. So it means that sociology is making their theory by intellectuals development, by going deeper into intellectual insights. Now, how many of you got the clarity on this? Sociology and common sense. Can you give me any example of common sense? Any phenomena of common sense? How opening a box? तो उसमें सोशियोलॉजी क्या आ जाएगी? ये तो सिर्फ एक्शन है ना. You do have to understand what is common sense with respect to theory. हाँ हाँ कॉमन सेंस रहता है वो यूजुअली एक एक्शन पे बेस्ड रहता है, बट एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वो हमारा या सोशियोलॉजिकल थिंकिंग रहता है वो उसके मेथड ऑफ फाइंडिंग और डेटा पे बेस्ड रहता है. तो कॉमन, ये तो हमारा एक्शन हो गया, तो फिर कॉमन सेंस का एग्जांपल बताओ ना आप. ये तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि आपने सिंपल एक बुक को, आपने एक बॉक्स ओपन कर दिया तो आपका एक्शन हो गया, तो आपको एग्जांपल्स बताओ ना. कॉमन सेंस का एग्जांपल बताओ. हम्म हम्म हाँ. यस, वेरी गुड. यस, डेफिनेटली. नेशन को चाहिए ब्यूरोक्रेट्स, इसलिए हमने इसको इतना हाइप किया हुआ है. और एग्जाम्पल? अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये हो गया कॉमन सेंसिकल ऑब्जर्वेशन. वो हम कैसे बता सकते हैं? हम देख रहे हैं बेगर्स, हम देख रहे हैं गरीबी, तो ये कॉमन सेंसिकल हो गया. अब अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? अभी आजकल फर्टिलिटी रेट हमारा डिक्रीज हुआ है, अब वो भी एक अनएम्प्लॉयमेंट लेके आएगा, ऐसा भी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. ये क्या हो गया? सोशियोलॉजी. इसका मतलब कॉमन सेंसिकल ऑब्जर्वेशन इज गोइंग टू बी देयर विद अस इन व्हेनसोएवर वी आर थिंकिंग. तो वो हमारे लाइफ में एक पार्ट है ही. तो कॉमन सेंसिकल इज एक्चुअली गिविंग अस बेस टू थिंक. और जब हम एनालिटिकल हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? सोशियोलॉजी.
Now, so far, you people should be writing some questions for your own homework, like for your own reflection. Please write down. और आपको ये खुद से आंसर लिखना होगा. जितने आप लोग ये क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते जाओगे उतना आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग, आदित्य? बोथ ऑफ यू? ओके. So it has to be very deeper when you people are writing your answers. अगर आपको लग रहा है कि अगेन इट्स अ कॉमन सेंस कि सिर्फ आपको क्या करना है, यूपीएससी की एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ना है, नहीं, वो तो ऐसा कॉमन सेंस पॉइंट है. आपको जल्दी से अपने माइंड को ट्रेन करना है कि ठीक है, मैंने इतना पढ़ लिया है, अब मुझे लिखना है. चलिए, राइट डाउन सब क्वेश्चंस. डिफाइन सोशियोलॉजी. Discuss sociological imagination. Relationship of sociology with common sense. What is scientific investigation? Investigation. What is the role of sociologists according to Peter Berger? What is the role of sociologists according to Peter Berger? Next question. According to Stuart Mills, the task of sociology is to make a connection between personal troubles. The task of sociology is to make a connection between a personal troubles and public issues. And public issues. Okay? How many of you think that you people can answer and be honest? Raise your hands. How many of you think कि हाँ ये पढ़ा है, कर सकते हैं? झूठ नहीं, क्योंकि फिर इम्प्रोवाइज नहीं कर पाओगे. वेरी गुड. अगर आप लोगों को ऐसा फीलिंग है कि यस वी कैन राइट, यू पीपल आर एक्चुअली गोइंग वेरी राइट. इट मीन्स कि आप लोग क्लास में फोकस होके सुन रहे हो. और बिगिन विद सिंपल क्वेश्चंस. हमारा प्रॉब्लम क्या है बच्चे, यूपीएससी की प्रिपरेशन में हम डायरेक्टली पीवाईक्यू को डील करने लग जाते हैं. पहले हमको स्किल्स डेवलप करनी है. जैसे अभी हमने रीडिंग स्किल्स डेवलप करी है, सिर्फ ये चैप्टर हमको बहुत डीपर वे में मैंने आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करा है. ठीक है, हम सेकंड चैप्टर में जाएंगे. थर्ड इंडियन सोशियोलॉजी वाला टॉपिक आई विल नॉट इवन टच. उसको तो आप खुद से सेल्फ रीडिंग करते रहोगे, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी. ओके, बट डेफिनेटली आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि आपका जो स्टार्टिंग है वो टेल कि आप एंड कैसे करोगे. तो आप में से although in this class I find lot many consistent students, let me see how long you people remain consistent, but बहुत सारे students I can see enthusiasm is very great. तो अगर आप लोगों का ऐसा enthusiasm maintain रह गया, let's just say February तक भी, ठीक है,
फरवरी तक भी अगर आप लोगों ने यही एंथुसियाज्म मेंटेन किया जो मैं देख सकती हूँ, ये एक आई वुड से फर्स्ट क्लास है जहाँ पे मोस्ट ऑफ यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंट, मोस्ट ऑफ यू, ओके। आई वुड से 98% स्टूडेंट्स आर, क्योंकि जो स्टूडेंट पहले ज्वाइन किए थे वो आज भी दिखते हैं मुझे क्लासेस में। बट यहाँ आपको इतना करना है, इसको एक एक ना व्हाट यू कॉल्ड मेडिटेशन की एक होती है ना एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज ही समझ लो कि मन करेगा भी नहीं करेगा भी तो भी क्लास में आना है और उसका रिजल्ट देखना आप। जैसे मन करता है कई बारी, मैं आपको अपना लाइफ का एक सीक्रेट बताती हूँ, जब भी आपको लगे ना आज हुमा मैम बहुत तैयार वायर होके आई हैं, अच्छी लग रही हैं, उस दिन मैं सुबह उठ के ये ज्यादातर होता है, मैं आज सुबह उठ के रो रही थी कि इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ मैं, पापा चलो चले जाते पापा के पास, इतना है इतना सब कुछ ऐसे ऐसे करके, तो मैं कहा नहीं जाना है, बच्चे वेट करेंगे, क्लास नहीं कैंसिल करनी। इट्स ऑल अबाउट मेडिटेशन, इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर माइंड, नॉट इजी टू टीच यूपीएससी एस्पिरेंट्स, नॉट इजी। कॉलेज में लाइफ बड़ी इजी हो गई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यूनिवर्सिटी में व्हेन आई यूज्ड टू टीच, सो पॉइंट हियर इज रिजल्ट आएगा। आप ये समझो कि जितना मन नहीं कर रहा है तो आप लोग क्या कर रहे हो, अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो, अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो, और जितना आप अपने माइंड को ट्रेन करते चले जाओगे इस यूपीएससी की जर्नी में, उतना आप क्लोज हो अपने सक्सेस से। अगर आपने स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया, इट इज गोइंग टू टेक ओनली 1.5 ईयर्स, 1.5 से 2 साल लगेंगे, लेकिन करना है कंसिस्टेंसी के साथ। और आप खुद देखोगे कि सोशियोलॉजी विल बी सो स्ट्रॉन्गेस्ट इन योर होल प्रिपरेशन। आपका सोशियोलॉजी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप ऐसे ऐसे GS1 आंसर राइटिंग से मेरा कोई भी स्टूडेंट नहीं डरता है, अगर प्रोवाइडेड उसने पूरी क्लासेस करी है और ये जो क्वेश्चंस हैं वो करे हैं, ओके। तो इसको एक साधना की तरह लो, यूपीएससी जर्नी को साधना की तरह लो, आसान नहीं है। जो भी जितने भी ऋषिज हैं जो साधना करते हैं, क्या वो आसान है? बहुत मुश्किल है, बट वो हमारे से ज्यादा फिट है। तो रेजिलेंस, परसेवरेंस, वो ऐसे ही होगा। कभी तो डेफिनेटली बहुत ही अगर तबीयत खराब है तो क्लास हो गई मिस, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया, लेकिन हमेशा आपके मन में फीलिंग होनी चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है, फिर नहीं क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, क्लास तो करनी है। आप खुद देख लेना आप लोगों को सोशियोलॉजी कितनी अच्छी आती है। इनफैक्ट आपकी सोशियोलॉजी इतनी स्ट्रांग होगी कि कोई अगर ऑफिसर भी है और उसने 3-4 बार ही सोशियोलॉजी मेंस के साथ भी लिखा है, अगर आपने मेरे से पढ़ाओ, मैं उसको आपको क्लास में बिठा दूंगी और आपके आंसर और उसके आंसर, आपके आंसर बेटर होंगे। और ये मैं डेटा के साथ बोल रही हूँ। खुद बच्चे बोलते हैं कि मैम ये इस बच्चे ने क्या लिखा हुआ था आंसर, मैंने कहा नहीं, ये अभी मेरे क्लासरूम का स्टूडेंट है। क्यों? मेरे इसमें मेरा कुछ नहीं है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू द वेज। जो बच्चा इस पाथ के ऊपर चलेगा वो अपने आप इंप्रूवमेंट लेके आ जाता है। मैं तो सभी को बता रही हूँ, आप लोगों को खुद देखना है कि आप में से कितने लोग नोट मेकिंग कर रहे हो, कितने लोग नोट्स बना रहे हो, आंसर्स लिख रहे हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, दिस यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के, दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। चलिए थैंक यू।